Hello everyone, welcome to Apti Plus Academy for Civil Services. This is a video on Kurukshetra monthly compilation for the month of June. As you know, Kurukshetra and YOJNA are the two important government journal that help you in prelims and mains examination. So in this session, I'll be discussing the most important article that were reported in this month of June, and we'll discuss that holistically so that it can help you in prelims and mains examination. So let's get started. Talking about this month edition for the June 2021, the cover of the Kurukshetra is about sustainable and inclusive rural growth. So this was a theme upon which the entire journal was released, and we'll see some of the important rural growth article that will help you in mains as well as in the essay paper. So if you find the important relevance of this, it would be in mains. Other than this, it would be there in essay. Some parts here and there may be relevant for your prelims examination as well. So the first is driver of inclusive rural growth. Right? Rural growth is something which will be always be important for your general studies paper 2, right? And also it can contribute to your general studies paper 4 in the case study sections. So once you are thorough with the concepts, once you are thorough with the government programs and policies, you can easily include that in your answer scripts. So what is there in the drivers of inclusive rural growth? First, अगर बात करें इंडिया की, India is the 5th largest economy in the world, right? And total GDP जो हमारी खास करके जो total corpus है, the net worth is $2.94 trillion, right? And government ने set किया है कि by 2025 we would be having a $5 trillion economy. So this target was set before COVID-19. ऐसा नहीं है, कोविड से पहले ही गवर्नमेंट ने इस टारगेट को चेज करने के लिए डेडलाइन बनाई हुई थी, बट बिकॉज ऑफ द कोविड इट माइट एक्सटेंड टू ईयर ऑन अनदर, बट स्टिल गवर्नमेंट इज होपफुल दैट देयर वुड बी अ 5 trillion economy by 2025. Now to achieve this target, there are some sectors that would be contributing. तो कुछ important sectors जो contribute करेंगे उसमें है agriculture, services and manufacturing. So what would be their contribution? How each these three sector is going to contribute? तो इसमें anticipation की गई है कि जो $3 trillion होगी, that would be coming from agriculture, 3 trillion coming from agriculture. Another basically अगर बात करें another 3 trillion coming from the services, right? So basically this is 1 trillion, this is not 3 trillion, right? This would be 1 trillion from agriculture, right? 3 trillion from services and 1 trillion from manufacturing. So this is a calculation $5 trillion economy which government has actually set, right? So if you're writing in mains, if you're writing in essay, make sure you can give this bifurcation, right? इस तरह के bifurcations आपके लिए helpful होंगे. Examiner will come to know कि आपको चीजें थोड़ी depth में पता है. Now the rural economy of India generates half of the national income, right? जो total जो generation है in national income India की, उसमें half is being contributed from the rural economy, and 2/3 of the employment is generated in the rural areas. So these are some of the factual point that is very, very important for your examination. Now agriculture or elite sectors की बात करें, it can alone contribute to 17.8% to the total gross value in the country by 2021. Now looking into some government initiative for the rural growth, what government actually did to achieve the potential of the rural growth. So first and foremost, अगर recent years में बात करें, government of India has initiated number of reforms, right? Talking about agriculture market, उसके अलावे best practices की अगर बात करें, government sponsored electronic national agriculture market है, ये सारी चीजें की गई है. This calls for the removing the barriers of licensing, right? In this movement of storage by providing online trading facilities, farmer के पास एक opportunity होगी where they can have the great number of farm commodities, right? उसके अलावा गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था the online transparent bidding system to encourage farmer through internal trading और जो ट्रेड को इंक्रीज करने के लिए through ENAM platform. So ENAM is not a new concept. I understand most of you must be familiar with the ENAM. If not, do check it out. These schemes are very relevant as of now, and this withstand with the farm welfare. Now, recently ENAMs में warehouse को जोड़ दिया गया है, warehouse based trading module that allow traders for the electronic negotiation of warehouse receipts, right?
So this is a new concept and can be important for the prelims examination as well. नाउ गवर्नमेंट ने कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ों को इंटीग्रेट करने की कोशिश की है. दे हैव इंक्लूडेड 1000 मंडीज इन द करंट यूनियन बजट, राइट. सो द फॉर्मेशन एंड प्रमोशन ऑफ 10,000 न्यू FPOs जो फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दे हैव बीन अनाउंस्ड इन द बजटरी प्रोविजंस विद अ अमाउंट ऑफ 6,865 crore rupees. These amounts are not important for you. You have to just know the concept behind a news, right? In a broader sense, FPO की अगर बात करें, this would improve the rural economy. It will create job opportunities for the rural youth in village itself. So though these people would not necessarily need to go any other places, they can trade from their native place. Now recently government ने जो भी new farm bills लेकर के आई, 3 farms bill that was actually there. The farmers are protesting in Delhi and its adjoining areas. So government says that these farm law will help marginal farmer who do not have means to bargain their better prices, right? So government intended, they said that these law would help farmers to get a fair price of their commodities, but farmer of the opinion that this is more of commercializations of their land. So this is another separate debate that I'm not getting into the detail of that. Now the new rule on contract farming give freedom. इंडिविजुअल के पास ये चॉइस होती है, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करे, एग्रीकल्चर कंपनीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट करे, रिटेल चेन में है. These are some of the provisions that were included under the new rules and regulation that is still outstanding. गवर्नमेंट ने अभी उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया है because of the stay from the Supreme Court, right? Now कुछ और ऐसे इनिशिएटिव्स जो गवर्नमेंट ने लिए टू बूस्ट द रूरल इकोनॉमी. द फर्स्ट इज एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी वेयर गवर्नमेंट इंटेंडेड टू डबल द एक्सपोर्ट बाय 2022. सो जस्ट टू टेल यू, ये जितने भी इनिशिएटिव्स मैं आपको बता रहा हूँ, दीज वे टेकन प्री कोविड, राइट. कोविड से पहले गवर्नमेंट ने एंटिसिपेट नहीं किया था कि इस तरह की प्रॉब्लम होगी, बट हेयर एंड देयर ये डेडलाइन जो है ये ऊपर नीचे हो सकती है बाय प्लस माइनस. इट कैन नॉट बी माइनस, इट कैन बी ओनली बाय +1 or 2 year, right? So this would help 7.4 crores in the next year to reach. Now we have national policy on electronics जो कि प्रमोट करती है incentives. It encourage rural development as well as rural employment. Third है किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम. It is popularly known as KCC schemes. यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट को बढ़ाया गया. The facilities has been extended to farmers, fishermen, लाइव स्टॉक ओनर्स. ये डायरेक्टली जो कैश फ्लो है रूरल मार्केट में दैट कैन बी इनहैंस्ड. नाउ 40 crore stimulus package to Manrega were provided. This would again help in getting the employment opportunities, the work opportunities in the rural areas. फिर DDU GKY, this is a skilling program, right? जहाँ पे रूरल यूथ को इकोनॉमिकली रेलेवेंट फोर्स बनाई जाएगी बाय गिविंग देम अ प्रॉपर स्किल ऑफ अ डिजायर्ड पोटेंशियली जिस सेक्टर में वो काम करना चाहते हैं उस सेक्टर्स के लिए. गरीब कल्याण रोजगार अभियान, दिस वाज लॉन्च्ड इन 116 districts, right? And the cost of 50,000 crore rupees to tackle the reverse migration. गवर्नमेंट की ये भी कोशिश है कि जो लोग एक्चुअल माइग्रेट करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर टू अर्न फॉर देयर लाइवलीहुड, they necessarily did not need to go to any other places, rather they can work on their native place, right? Strengthening all weather road connectivity is something which is again government is looking forward under the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojna. So PM GSKY is again one of the most prominent and successful initiative of the government. आपसे डायरेक्ट इस पे इंटरव्यू पे भी सवाल पूछे जा सकते हैं. So these were some of the most relevant initiative that government has taken. Now the Ministry of MSME, that is micro small and medium enterprises, इन्होंने implement किया है स्फूर्ति. स्फूर्ति is called scheme for fund for regeneration of traditional industries, जहाँ पे cluster based जो small scale industries हैं उनको rural area में develop किया जाएगा, right? And the focus would be there on the rural areas. Now स्फूर्ति is striving to organize the traditional industries जहाँ पे जो आर्टिशियन है विलेज के उनको क्लस्टर बेस्ड डेवलपमेंट दी जाए ताकि वो अपने सामान को एक कंपिटिटिव रेट पे बेच सके एंड वो फाइनेंशियली सस्टेनेबल हो, राइट? द प्राइस शुड बी सस्टेनेबल. सो दीज टाइप ऑफ प्लेटफॉर्म इन अ लॉन्गर ड्यूरेशन वुड डेफिनेटली हैव द क्राफ्ट्समैन एंड द फार्मर कम्युनिटी. Now the other topic is sustainable mining.
This is something a very important topic for the general studies paper 2 as well as general studies paper 3. दोनों पेपर में पेपर 3 में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि the syllabus of general studies paper 3 call for environment impact assessment, environmental degradation, so there it become very relevant. Also this type of the new concept can be relevant for your prelims examination also, right? So let's understand what is sustainable mining. इंडिया में अगर बात करें मिनरल्स की, इंडिया इज अ रिच कंट्री, इंडिया इज अ कंट्री विच हैज़ अ रिच सोर्स ऑफ मिनरल दैट इंक्लूड कोल. हमारे पास कोल की 4th लार्जेस्ट रिजर्व है वर्ल्ड में. आयरन ओर और मैग्नीज की बात करें, वी आर 7th रिजर्व लार्जेस्ट रिजर्व इन द वर्ल्ड. टॉकिंग अबाउट माइका, वी हैव द 5th लार्जेस्ट रिजर्व इन द वर्ल्ड. बॉक्साइट beside the reserve of chromite, limestone, chromium, diamonds and natural gases, right? So these ranking is important, make sure you remember this. और इंडिया की अगर बात करें, इंडिया has potentially a big player in the global mineral trade owing a huge obvious geological potential in several mining. So we have a forte, we have been doing this for a longer duration. This is not something which is new to India. Now, what is sustainable mining? The word itself call for the sustainability is something which calls for a method that can be used for the future generation without destroying the present environment or the condition. तो जो biggest impediment है that is opening up a greenfield mines, right? जहाँ पे forest diversifications को remain रखा जाए, environmental clearances को ध्यान में रख के ही आगे काम किया जाए, right? There should be NOCs which should be coming from the Ministry of Environment and Climate Change. Environment protections की अगर बात करें, mining should not be seen as each other opponents. No, we need to have a balanced approach and we need to follow up a sustainable mining that can be practiced. So sustainable mining is something which is very relevant and important. Now moving to some suggestions in favor of ensuring sustainable mining, क्या क्या चीज़ें suggest की गई है. So जो लीजी होगी, जिसको लीज मिलेगा माइन करने के लिए, दे शुड अंडरटेक प्रॉपर माइन क्लोजर विद इन स्पेसिफाइड टाइम आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ लीज, राइट? सो ये एक फर्स्ट सजेशन है. दूसरी, देयर वुड बी ओपन अप लार्ज एरिया इन क्लोज माइन वेयर compensatory afforestation can be taken. So once the mining is done, afforestation activity should be promoted. Third, जो manual mining है, that should be banned. Only for a mechanized mine that should be allowed to operate, right? So we need to restrict the manual mining and afforestation should be promoted in larger context. Now, zero wastage mining should be the norms and not exception. So we need to promote zero mining wastage also. There should be a limitation on number of person working in the families getting settled in the leasy area, जो जहाँ पे लीज मिल रही है वहाँ पे, and reduce degradations near forest due to the population pressure, right? So these were some of the important suggestions that were suggested in terms of sustainable mining. Now government ने क्या क्या steps लिए हैं? There are a lot of steps taken by the government of India. So in order to enhance the productions of iron ore, country में जो iron ore की production उनको बढ़ाया जाए, government has amended MMDR, that is Mine Mineral Development Act जो है उसको change की गई है. Section 8B insert की गई है that allowed seamless vesting of statutory clearance, right? They need to have a statutory clearances for earlier lesser than 1, right? उसके अलावा to allow the capitative mining up to 50% of the productions, right? 50% of production जो requirement ज़रूरत होगी उसको पूरे करने के बाद end use plant on paying additional royalty to the state government, right? So these are the changes that were actually made in the MMDR Act. Now fixing the time frame fix की गई है. अगर mining होती है, mining lease अगर दी जाती है, so the date of reservations and the commencing of production should be dispatched, और उसको डेडलाइन के अंदर करने की जरूरत पड़ेगी. Empowering central government to conduct auctions, re-auctions की प्रोसेस भी कंटिन्यू की जा सकती है. If the government fails to complete the auction process specified period times में, तो कंसल्टेशन करके सेंटर और स्टेट के बीच में कुछ समन्वय बनाई जा सकती है. Allow private players to engage in the government to undertake mineral exploration without the need of RPPL in auction of public sector entities. Now we have National Mineral Policy 2019. This is not new, but some policies would be again relevant for your examination.
सो एनएमपी अप्रूव की गई थी यूनियन कैबिनेट ने 2019 में, जो एम है टू हैव मोर इफेक्टिव, मीनिंगफुल एंड इम्प्लीमेंटेबल पॉलिसी दैट ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी, बेटर रेगुलेशंस के लिए, उसकी इन्फोर्सेबिलिटीज के लिए, एक इकोनॉमिक ग्रोथ को ध्यान में रखते हुए सस्टेनेबल माइनिंग प्रैक्टिसेस नेशनल मिनरल पॉलिसी में अडॉप्ट की गई है. Now, NMP 2019 called for mineral continues to be an important sources of foreign exchange earning, right? We import also. अगर एक्सपोर्ट की बात करें, बेसिकली जो पॉलिसीज है जितनी भी ज़्यादा एक्सपोर्ट की जाती है, द डायनेमिक मिनरल इन्वेंटर्स वेल एज शॉर्ट ऑफ मीडियम लॉन्ग टर्म एंड नीड ऑफ द कंट्रीज. तो शॉर्ट टर्म क्या ज़रूरतें हैं, मीडियम टर्म क्या ज़रूरतें हैं, लॉन्ग टर्म क्या ज़रूरत है, एवरीथिंग नीड टू बी डन इन टर्म्स ऑफ मिनरल इन्वेंटरीज. Now, on the other hand, imports की अगर बात करें, there shall be a coordinated far possible indigenous development of mineral-based industries. So, cluster-based development is also necessary in this area, and these laws, NMP rules 2019, call for the indigenous-based development. Now, fostering growth in the rural India, this is something which is again very significant. As you know, the entire edition talks about rural India. So, जितने भी आर्टिकल होंगे वो रूरल इंडिया पे ही ज़्यादा फोकस होंगे. मेक श्योर कुछ ऐसे प्रोग्राम्स और पॉलिसीज हैं जो आपने पहले पढ़े होंगे, बट यू हैव टू राइट दैट इन एग्जामिनेशन, राइट? डोंट थिंक दैट दिस आर ओल्ड एंड दिस आर न्यू पॉलिसी. एवरी पॉलिसी दैट गवर्नमेंट मेक हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट इन द रूरल इंडिया. नाउ, इम्प्रूविंग करने के लिए इनके इंफ्रास्ट्रक्चर्स को, उसको एक्सपैंड करने के लिए, और जो गैप है उसको पूरी करने के लिए अर्बन और रूरल एरिया में इस तरह की गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स लेती रहती है ताकि पूरे एरिया को ओवरऑल डेवलप किया जा सके. इट अलाउ बेटर एक्सेस टू एजुकेशन, हेल्थ केयर और इकोनॉमिक सक्सेस के लिए. क्या क्या इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट ने लिए दैट यू मस्ट नो. द फर्स्ट इज प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना. आई डिस्कस दिस प्रीवियसली ऑल्सो. एक ऑल वेदर एक्सेस रोड बनाने की बात की गई है जहाँ पे फिजिकली कोई प्रॉब्लम ना हो, लोगों को एक वेल कनेक्टेड रोड्स मिले, चाहे वो नेशनल हाईवे हो या स्टेट रोड्स. Now, the enhanced rural connectivity increase agricultural income, क्योंकि कई ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे बेटर कनेक्टिविटी नहीं होने की वजह से मार्केट तक प्रोडक्ट सही टाइम पे नहीं पहुँच पाती है, राइट? टू बेटर एक्सेस टू द मार्केट वी नीड टू हैव अ गुड रोड्स दैट अगेन प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड सोशल सर्विसेज. सेकेंड इज संसद आदर्श ग्राम योजना, SAGY. सो यहाँ पे नर्चर की गई है नेशनल प्राइड को, पैट्रियटिज्म को, कम्युनिटी स्पिरिट को, सेल्फ कॉन्फिडेंस को, ताकि इस तरह की स्कीम्स को गवर्नमेंट कमिटमेंट, महात्मा गांधी के जो विजन्स हैं उसके जो कोर आइडियाज़ हैं उनको इम्प्लीमेंट किया जा सके. इस प्रोग्राम में जो संसद आदर्श ग्राम योजना है, यहाँ पे बेसिक एम्यूनिटीज़ और अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाएगी रूरल इंडिया में, सो दैट इट क्रिएट्स अ मॉडल विलेज. आदर्श मीन्स लाइक अ मॉडल, इट कैन सेट अ प्रेसिडेंट फॉर दैट, राइट, across the country. Now, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, दिस इज फॉर द रूरल एरियाज. यहाँ पे गवर्नमेंट ने स्कीम को स्ट्रेंथन करने की कोशिश की है, और जो पूरा टाइगलाइन है, जो पूरा थीम है इस स्कीम का, दैट इज हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022. अगेन +1 or 2 कैन बी देयर बिकॉज ऑफ द कोविड. नाउ इट प्रोवाइड्स पक्का हाउस. पक्का मीन्स अ परमानेंट हाउस विथ अ वेल लिंटन हाउस कैन बी देयर, जहाँ पे एक जो बेसिकली पहले कच्चे हाउस होते थे उनको रिप्लेस करके पक्का हाउस दिया जाएगा. सो गवर्नमेंट हैज़ प्रोवाइडेड असिस्टेंस ऑफ 1.2 लाख in a plain areas, right? That is increased from 70% and 75 to 1.3 for the hilly areas. So this is according to the integrated action plan upon the districts. Now, housing schemes जो है एक important element है for elevation of poverty in the rural areas, and in this basically scheme or in this yojana, government also called for a well-established toilet in a particular household, right? Now, for digitalizations, there are some other steps that government has taken to improve digitalization in rural India. So, Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana, this is again something which would improve the national mission for financial inclusion, right? Every individual should have a bank account. This is a main motto behind the Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana. ये एनविसास करती है एक्सेस टू बैंकिंग फैसिलिटीज एटलीस्ट
वन बेसिक अकाउंट होने चाहिए हर एक इंडिविजुअल को, ताकि इंडिया में फिनेंशियल लिटरेसी को प्रमोट किया जा सके. क्रेडिट इंश्योरेंस शुड बी देयर एंड pensioner should be directly benefited with a bank account. Swamita scheme, this is again an important schemes that provide for an integrated poverty validation solutions पूरे इंडिया में. जो विलेज हाउस होल्ड ओनर्स हैं कैन बी ग्रांटेड द रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, राइट, उनके जो प्रॉपर्टी है, जो लैंड्स हैं, दैट कैन हैव अ रिकॉर्ड एंड अंडरटेक लोन्स ऑन द फाइनेंशियल बेनिफिट फ्रॉम द बैंक. सो दिस इज अ स्वमिता स्कीम. Now, strengthening of Panchayati Raj system, definitely a system is there which help the people of the villages to strengthen their overall livelihood. तो पंचायती राज सिस्टम को strengthen करने की भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है. So, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, this aim to strengthen the पंचायती राज institutions, जो हमारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, जहाँ पे ये कहा गया है there should be convergence with the मिशन अंत्योदय योजना emphasizing on PRI 117 aspirational district भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाए हुए हैं. Now this is a testimony to recognize the self-governance inhalation of component ensuring sustainable and rural India. So राष्ट्रीय ग्राम अभियान is for the strengthening of Panchayati Raj institutions or the PRIs. Mahatma Gandhi Rural Employment Guarantee Act, this is not new. I think most of you must be aware of this fact. But just to add on, कोविड के बाद इस चीज़ में बहुत ज़्यादा रेंज इंक्रीज हुई है. द नंबर ऑफ एनरोलमेंट इन द मनरेगा हैज़ इंक्रीज ड्यू टू द सीवियर लॉकडाउन एंड पीपल नॉट फाइंडिंग द एडिक्वेट जॉब्स. दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, right? So this aims to bring diversity in the rural families by catering youth aspirations and giving them the skills, adequate skill required. Women, youth and rural transformation, how the sectors can help these three segments. Now gender की बात करें, this is inevitable, right? And push factor for the growth can come from any individual, that is male, female, any sectors, right? So India, women and youth constitute a major share of the populations, right? We are the youngest country in the world. Populations की अगर बात करें, खास करके promotion and ensuring gender equality is very important. Empowering rural women is something which government should be looking upon, and actually government is doing that. Productive employment is something which is very important. Sustainable economic growth, effectiveness of poverty reductions और food security initiatives है जो कि गवर्नमेंट ने लिए हुए हैं. Now here comes the role of women, how a woman can play a significant role in the society as well as in the development of economy. So women plays a role in the rural economy in terms as farmers, wage earner and entrepreneurs. We know a lot of women entrepreneurs who are doing great in the field. Now responsibility की अगर बात करें, well being of the member families including food provisions, child care और early care में भी women's की काफ़ी अहम रोल होती है. Women's are the key agents for rural growth, right, and development of India. If you see आशा वर्कर, आप यहाँ पे क्लासिकल एग्जाम्पल दे सकते हैं आशा वर्कर की, जिन्होंने बहुत हद तक लोगों को जागरूक करने में मदद की है, right? And these women can play a catalytic role in achieving the transformational economy, environmental and social changes for a sustainable development of India. Now sector wise participations की अगर बात करें, एग्रीकल्चर में अगर आप देखोगे, so ILO के estimate है 93% of the workforce are young men and women. So both of the gender is contributing and they are engaged in the informal sectors like agriculture. In husbandry, women have played a significant role. जहाँ पे रीजनल डिफरेंसेस को ख़त्म की गई है, चाहे वो एनिमल्स हो, ग्रेजिंग हो, फूड्स कलेक्शंस हो, क्लीनिंग ऑफ एनिमल शीट्स, प्रोसेसिंग लाइवली स्टॉक प्रोडक्ट्स. सो देयर कंट्रीब्यूशन इज आल्सो देयर इन द एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर्स. एलीट सेक्टर में सेरिकल्चर, हैंडलूम, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, दीज थ्री आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर्स, जहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में भी इसको प्रमोट किया गया है पोटेंशियली बहुत लार्ज नंबर्स पे, एंड इट हैज़ प्रोवाइडेड ह्यूज एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो, राइट? So some rural community have provided with a basic scheme under DDUI, और local market produced जो हैं वो भी अपने products को sell कर रहे हैं. Small scale industries, women में खास करके rural economies are directly or indirectly processing non-timber forest products on a small scale enterprises. Skill development की अगर बात करें, skill development
वेरियस एरियाज में हुई हैं, जहाँ पे मशीन्स, मैन्युफैक्चरिंग, स्पोर्ट्स गुड्स, म्यूजिक, टेक्नोलॉजी एंड एवरी अदर सो एंड फोर्थ सेक्टर्स आर बीइंग एक्सप्लोर्ड। चैलेंजेस क्या क्या है रूरल वुमेन्स के पास? सबसे पहली चैलेंज है दे हैव अनइक्वल एक्सेस टू द प्रोडक्टिव रिसोर्सेज। सेकंड, लिमिटेड एक्सेस ऑफ एजुकेशन, बिकॉज इन रूरल इंडिया स्टिल people find it very inconvenient for higher education of their girl child, right? Extension of credit, social care of work of the household and communities is a challenges. Limited participation of women is a challenge. Voice influence in the rural organization. These are some of the challenges that are faced by the rural women people. Challenges faced by the rural youth. Now youth के साथ भी बहुत सारी चुनौतियां हैं जो वो सामना करते हैं. They have limited access to the productions of grain employment in the agriculture sectors. Limited access है उनके पास skill development की. Education proper नहीं है, formal education, जिसकी वजह से उनको proper skill acquire करने में परेशानी आती है. Excluding from institutional that provide access to financial services. Financial crunch है. They do not have sufficient capital, ना तो credit, ना ही सेविंग, ना ही इंश्योरेंस. सो दीज आर क्रिएटिंग अ मार्केट नीड्स जो है उनके ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाते. किस तरह से वुमेन्स और यूथ की जो लाइवलीहुड है रूरल एरिया से इम्प्रूव हो सकती है? सो द मेन प्रॉब्लम ऑफ रूरल एरियाज इज अ लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड एम्प्लॉयमेंट, राइट? सो एम्प्लॉयमेंट को अगर बढ़ाया जाए, इंक्रीज जो डिमांड लेवल है उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है. जो इंटरबिलिटी है, डिसएडवांटेज वुमेन्स की, दैट कैन टेक एन एडवांटेज. मार्केट लेबर पार्टिसिपेशंस में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ उनको देने की ज़रूरत है. Now the provisions of good quality school skill training is something which is very important, जहाँ पे job oriented courses उनको classes कराए जा सकते हैं. That can remain very limited in most rural areas. अभी भी बहुत limited classes ऐसे करवाए जा रहे हैं जिसकी सारी benefits rural area के लोग ले पाएंगे. Rural entrepreneurship. This is something which is very important, and this has emerged in dairy sector, agriculture sectors, fishery sectors. So definitely some people are doing a great and credible job in rural entrepreneurship. So what is there? Rural entrepreneurship की अगर बात करें, I think most of you must be aware of the definition. ये एक ऐसी एक्टिविटी है जहाँ इंडिविजुअल या कंट्री के साइड में, in a country side, they produce a manufacturing plant, provide services, adopt a new technology to benefit economically themselves as well as in the nation development. It bring rural resources, engage in the human resources in the rural area. जितने भी rural population है उनको रोजगार देना, provide employment to them so that they can also earn, and at the same time they can generate the economy of that particular area. So rural entrepreneurship is a synonyms to the rural industrialization. आप रूरल एंटरप्रेन्योरशिप को रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में भी बता सकते हैं. फिर राइटिंग मेंस आंसर आप इस तरह के वर्ड्स यूज कर सकते हैं, राइट? इन इंडिया साइक्लिक एंड डिसगाइज एम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट. वी नो क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट भी काफ़ी ज़्यादा एग्जिस्ट करते हैं. दीज आर इकोनॉमिकल टर्म्स. मेक श्योर यू आर अवेयर विथ ऑल दिस टर्म्स, राइट? Due to distress migration of the people, mega cities remain deserted, और जो village resources है that remain unexplored. So these type of entrepreneurship, this type of technology upgradation would definitely help to explore it more. Now progress of entrepreneurial in India, किस तरह से अगर micro, small and medium enterprises की बात करें, this sector contributes 30% to the country GDP, 45% manufacturing में, 48% exports में. These are the largest share of employment, right? So these numbers are important for the agriculture point of view. और rural entrepreneurship है वो एक क्रिएट करती है न्यू इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज भी रूरल वुमेन्स के लिए, मेंस के लिए, एंड कंट्रीब्यूट फॉर द ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी. नाउ वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप की अगर बात करें, वेयर दे हैव पोटेंशियली कंट्रीब्यूटेड इन रिडक्शंस ऑफ पॉवर्टी, एम्प्लॉयमेंट, एम्पावरिंग वुमेन फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक मोबिलिटी, राइट? एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो यूएन नेशंस की, उसके 5th गोल के टारगेट को पूरा करने के लिए वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. SDG के जितने गोल्स हैं वो आप जरूर याद करें. दीज गोल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. यू कैन डायरेक्टली लिंक एवरी टाइम व्हेन अ क्वेश्चन इज आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन. नाउ क्या क्या चैलेंजेस हैं, अपॉर्चुनिटीज हैं रूरल एंटरप्रेन्योरशिप के साथ, विल अंडरस्टैंड दैट एज वेल.
सो कुछ नंबर ऑफ चैलेंजेस है रूरल एंटरप्रेन्योर के साथ. दे हैव द फाइनेंशियल चैलेंजेस, दे हैव सोशल चैलेंजेस, दे हैव लैक ऑफ लो लेवल ऑफ एजुकेशन, एक्सपीरियंस नहीं है उनके पास, एक्सपर्टीज नहीं है, परचेजिंग पावर काफ़ी कम है. सो ये थ्रेट है अर्बन एंटरप्रेन्योरशिप के कंपैरिजन में रूरल पीपल के साथ, राइट. बट और भी कुछ चैलेंजेस है दैट इंक्लूड लो एस्टैब्लिशमेंट कॉस्ट इन्वॉल्व, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, कंपिटिटिव एडवांटेज एग्जिस्ट, लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शंस जो है, right, government policy subsidies that are slowly diverted into this now, and reduce promotional cost existing customer base products. So however, this challenge do exist in some of the opportunities for the rural entrepreneurship. तो आप दोनों context में इसको समझ सकते हो, right. Now government initiatives, जो कि कुछ important initiatives government ने लिए हैं, that is credit and financial assistance for the rural enterprises. We have Prime Minister Employment Generation Program, Credit Linked Capital Subsidy Scheme, Credit Guarantee Trust Fund, MSME Interest Subvention Schemes for Incremental Credit to the Micro Small Enterprises, right? और इस बार जो सेकेंड वेव के बाद गवर्नमेंट ने इकोनॉमिक स्टिमुलस दिया था, दिस वाज द फर्स्ट स्टिमुलस दैट वाज गिवन आफ्टर द सेकेंड कोविड वेव, राइट. सेकेंड कोविड वेव के बाद, और वैसे सेकेंड टोटल स्टिमुलस है जो कि गवर्नमेंट ने दिया है. तो उसमें इन सारे क्रेडिट गारंटीड जो एमएसएमई स्कीम्स हैं उनके लिए भी काफ़ी अमाउंट इंक्रीज किए गए. नाउ स्किल फॉर डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग, इसके लिए वी हैव अ स्कीम फॉर प्रमोशन एंड इनोवेशन ऑफ रूरल इंडस्ट्रीज एंटरप्रेन्योरशिप, जिसको एस्पायर कहते हैं. ईएसडीपी एंटरप्रेन्योरियल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ग्राम उदय विकास योजना. सो दीज schemes are very 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 important for your examinations, and if you're writing a general studies paper 4 case study पे भी अगर आप लिख रहे हैं तो रूरल इंडिया पे अगर कोई केस स्टडीज आती है स्किल डेवलपमेंट के बारे में आपसे पूछा जाता है, if you're a district administrator how would you use potentially their knowledge, so you can quote some of the scheme where you can enroll the mass. Scheme for the infrastructure development, scheme for the fund regeneration and traditional industries, Spurti. I have talked a detail about this. Scheme for micro enterprises cluster development, that is MSME CDP. Scheme for marketing assistance, यहाँ पे financial assistance दी जाती है खादी institutions और MDPA को, right, MPD. Schemes for technology upgradations, competitiveness के लिए, financial support to the MSME for the Z certification, ZET, right. So these are the marketing assistance and technology upgradations scheme that is provided by the government of India, right. So this was all about the Kurukshetra magazine. We have a lot more initiatives for you. We have daily news and editorial analysis. We have IAS GAZETTE magazine. The subscription is also open for an year. You can avail at an affordable price. We have FCA, Foreign Current Affairs, Fortnight Current Affairs, which used to come on every second Saturday, Sunday. So you can check all our initiatives in our YouTube channel. If you have not subscribed to our channel, do subscribe the channel. You'll get a lot more informative videos. If you like this video, do not forget to give a thumbs up. If you have any other concern, do let me know. I'll be more than happy to assist you. For time being, I'm signing off. Wish you all the best. Thank you so much for listening.